In last class, we have discussed representation of UV visible spectra, and we have also seen peaks in UV visible spectra are broad, not sharp. They are broad peaks, not sharp peak, and we have to find out why they are broad, not sharp. Reason discuss ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟੇ? Anyone? क्योंकि इस इंटरमिक्सिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ rotational ਤੇ vibration ਦੀ. Yes. Have you done that? Yes, sir. We have done in classroom. Okay. So you can see this is lambda max at which absorption is maximum. Okay. This is lambda max. Now you can see this peak is not sharp, but it is a broad peak. And why it is broad peak? Because in this case, apart from electronic energy levels, there is an intermixing of vibrational and rotational energy levels. Minimum energy gap is in between vibrational and rotational energy levels. Due to which, what happens? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बोलो बेटे, due to which? Due to which? बोलो. हाँ जी. ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ. हाँ जी. Due to which large number of transitions take place in between various electronic energy levels, vibrational and rotational energy levels. So your electronic transitions are not pure, but you also got vibrational to electronic, rotational to another electronic, vibrational to electronic, or rotational to electronic. So this gives rise to a large number of transitions like this, which are closely spaced in energy. So this gives rise to a large number of lines, large number of transitions, or the large number of lines which are closely spaced. So your instrument spectrometer, it just envelop around these lines to give rise to broad spectrum. So your spectrum is broad, not sharp. So I think we have already discussed this thing. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now next is a very important term, that is absorption laws. There are two laws, or more we can say there's a single law that governs absorption, that is Lambert's Beer law. So as we have seen in spectrum, you have two axes. Along this axis, absorption takes place, and along this axis you have wavelength. Now, what is principle of this absorption? केड़ी wavelength absorb होएगी, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? Last time ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ principle of absorption. So ਜਦੋਂ absorption ਹੁੰਦੀ ਹੈ, depending upon structure of your compound, only one wavelength is absorbed, and that depends upon which wavelength will be absorbed. बेटे पढ़िया नहीं, भुल गए पिछे वाला? जिस दी एनर्जी दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ਨੂੰ मैच करेगी. That means delta E is equals to energy of incident radiations.
अगर इसकी एनर्जी corresponding है 415 नैनोमीटर corresponding to this wavelength, ਤਾਂ incident radiation भी ਕਿਹੜੀ absorb होएगी 415 nanometer. So this absorption, it depends upon energy gap between two electronic energy level and energy of incident radiations. While this absorbance ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਏਗੀ, that is given by Lambert's-Beer's law. Am I clear? Yes sir. No response बेटे, clear है कि नहीं गल? Yes sir. Okay. So let us first of all let me explain this law in a very simple terms. Suppose you have a glass, ठीक है, ਕੱਚ ਦਾ glass, ठीक है, सारे ने देखा, and suppose you fill it with water. When you fill it with water, will you able to see through it? Will you able to see through it? ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उससे जो पानी ले लिया है उससे विचकार देख सकते हो कि नहीं, आर पार बोलो। क्लियरली नहीं दिखेगा, क्लियरली नहीं दिखेगा, बट यू कैन सी। Yes sir. हाँ जी। Now suppose you add 1 tablespoon of salt in it. 1 tablespoon of salt. What will happen to its transparency? Decrease. So it will increased. कॉमन जी गल है, शिकंजवी नहीं बनाई, अगर पानी Decrease होएगी तो किस तरह जो होता है, ट्रांसपेरेंट रहता है या इट बिकम ओपेक? थोड़ा मिल्की सा हो जाता है, थोड़ा मिल्की जा हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी थ्रू इट. दैट मींस Yes. लाइट उस ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? डिक्रीज हो रहा है, एब्जॉर्प्शन लाइट का इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया? सर इनक्रीज होएगा, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, then absorption will further increase or decrease of light? सर इनक्रीज होएगी, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ opaque, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਆਰ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਕਨਕਲੂਡ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਫੈਕਟ, अगर ਆਪਾਂ कंसंट्रेशन इंक्रीज करिए, ठीक है, इफ यू इंक्रीज कंसंट्रेशन, ठीक है, इत्थे ਆਪਾਂ कंसंट्रेशन की कर रहे सी, इंक्रीज कर रहे सी। इफ यू इंक्रीज कंसंट्रेशन, एब्जॉर्बेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज? बोलो। सर इंक्रीज, हाँ जी, इंक्रीज, increase. So absorbance will increase with increase in concentration. This is your Beer's law. And suppose if you have two vessels, one vessel is of length 1 centimeter and another is of 10 सेंटीमीटर, तो किस दे विच एब्जॉर्बेंस ज्यादा होएगा? दिस इज कॉल्ड पाथ लेंथ ऑफ लाइट। किस दे विच एब्जॉर्बेंस ज्यादा होएगा? ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
बोलो बेटे कॉमन सेंस दी गल्लां ने की करी जांदे हो सो गए हो थक गए हो शाम तक दसो मैनू सर इस थोड़ी जी कंफ्यूजन हुई है दोबारा रिपीट कर दो स्टेटमेंट बेटे अगर पाथ लेंथ किसी भी मान लो इसकी वेट 1 सेंटीमीटर थोड़े सैल दी ठीक है और इसकी हैगी है 10 सेंटीमीटर यानी कि इस नालों इसकी वेट की है ज़्यादा है तो किस केस में लाइट का एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होएगा सर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होएगा क्यों क्योंकि सर ये घट है फिर एरिया घट है सर हाँ जी फिर जो एरिया घट है डैट मीनस ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ 10 सेंटीमीटर ਜਦੋਂ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਦਿਸ ਲਾ ਇਜ਼ ਲੈਂਬਰਟਸ law so absorbance is directly proportional to path length this law is Lambert's law and combination of these two law is Lambert's Beer's law. So let us write their definition. Lambert's Beer's law. Suppose this was your cell containing solvent and solute. जिससे ਆਪਾਂ UV spectrum measure कर रहे हैं वो हैगा solute. And suppose I naught is a incident light and I is the intensity of outgoing light. Then absorbance is given by log I naught upon I. Intensity of incident light, intensity of outgoing light. And let's C is a concentration of your compound and L is a path length of this cell. जिसके विच अपन सैंपल लिया हुआ है. So what is Beer's law? When beam of monochromatic light falls on a sample taken in a solvent, taken in a नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट क्योंकि जो तुसी सॉल्वेंट यूज कर रहे हो वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए टेकन इन ए नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट is directly proportional to what? बोलो बोलो बेटे जागो. concentration sir. Yeah. Molar Absorbance of light is concentration. directly proportional to Molar concentration of absorbing substance. concentration of absorbing substance. So A is equals to log I naught upon I directly proportional to C. And Lambert's law. हाँ जी बोलो Lambert's law. बोलो Lambert's law. Absorption of light is directly proportional to path length. Path length. So ਆਪਾਂ ਇਹ same चीज दोबारा तो लिखांगे. When beam of monochromatic light falls on sample dissolved in non-absorbing solvent, absorbance of light is directly proportional to its path length in sample. So A is equals to log directly proportional to L. And combination of these two laws is Lambert's Beer's law. Okay, if you combine
these both laws, you will get Lambert-Beer's law. So yes, who will state Lambert-Beer's law? Ikattha, Ishika, Yes, sir. karo bete. Lambert-Beer's When beam of definition bolo. monochrome when beam of monochromatic light falls on the sample dissolved in non-absorbing solvent, absorbance is directly proportional to concentration and path length in the sample. Path length of light. Bilkul theek. So you have directly proportional to L into C. Now suppose we want to remove this sign of proportionality. So we have to replace this sign of proportionality with what? Constant. Constant. And here it is replaced by epsilon. So A is equals to log I naught upon I is equals to epsilon L into C, where epsilon is a constant and it is called absorptivity. Absorptivity or molecular extinction coefficient. Higher the value of epsilon, more absorbance, lower the value of epsilon, lesser absorbance. So this is your Lambert-Beer's law. Can you calculate units of epsilon? So your A is equals to epsilon L into C. So epsilon is equals to A upon LC. So what will be units of extinction coefficient? Units of molecular extinction coefficient. Calculate karo. I am telling you absorbance is dimensionless with no units. What are units of L? Length ਦੇ ਕੀ units ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ Sir, meter. meter or centimeter. चलो take centimeter. And C is a concentration. What are units of concentration? Molarity. Molarity. Molar. Moles. Moles per liter or moles per centimeter cube. Because liter is a unit of volume, so we can convert it into centimeter cube. So now what are units of epsilon? ਕੀ ਆਣਗੇ? centimeter square per mole. Centimeter square per mole. So these are the units of epsilon. So exam ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ numerical ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ absorbance ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, epsilon ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, length ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, you can calculate concentration, or any three terms will be provided and you can calculate fourth one. Can you do that? कर सकते हो कि नहीं? सिंपल रिलेशन है. मान लो थानू कोई दो टर्म्स दित्तियां हुई ने, तीसरी कैलकुलेट कर सकती हो या नहीं? चौथी कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? अगर 10 दित्तियां हुई. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Okay. Then Yes. last is limitations of Lambert's-Beer's law. So this Lambert's-Beer law is applicable only when there is a single molecular
species is present in solution. If two or more species are present in equilibrium with each other, in that case this law is not applicable. कहने का मतलब कि ये जिस कंपाउंड का तुसी स्पैक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हो ਜਾਂ ਲੈਂਬਰਟਸ-ਬੀਅਰ ਲੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਸਿੰਗਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਫਾਰਮ. ਅਗਰ ਦੋ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, in that case this law is not applicable. Any example of such kind of equilibrium between two or more than two species? Like keto-enol equilibrium. So if you have a ketonic group with alpha hydrogen, that can exist in enolic form also. So in this case, this law is not applicable. And what about solvent? जिहड़ा आपां solvent use कर रहे हैं, उसका की characteristic होना चाहिए? Solvent कितना दा होना चाहिए? Non-absorbing. Yes. Solvent must be non-absorbing. And it should not form complex or react with solute. That means जब तुसी solvent use करोगे, ठीक है, एक तो खुद non absorbing होना चाहिए है और जो solute molecule है जिसका आप स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे नाल वो complex या react नहीं करना चाहिए. So these two are limitations of Lambert's-Beer's law. Now any question over this you can please ask.